morning, everyone. I hope आप सब अच्छे हैं. You are doing good. Your health is good. You're fine. Before starting, I'll just mention that my name is Chitwan Garg and I go by pronouns he and they. I am working I'm working under the communication team in CDF Transformation, and I'm your host for this session. I welcome you all to another session of Inclusion Adda, which is now under Civil 20 India 2023. Inclusion Adda basically is an initiative, by CDF Transformation that offers a platform for building a peaceful, just, and inclusive society, as we all need that. Here, the people from inclusive and diverse communities share their personal and professional achievements and stories, building an inclusive and diverse community. Facilitating a sustained exchange of critical reflection and perspective amongst civil society in and beyond G20 countries, the transformation basically aims to mainstream the trans community and into society, starting from building knowledge in basic IT and professional edge, and then moving towards mainstream employment or entrepreneurial opportunities. So, without further delay, I would request our guest of today, that is Nivedita Chatterjee, to introduce herself and let the audience know about her. Hi everyone, I'm Nivedita and I'm doing my doctoral project in University of Surrey. But इसके पहले I have been a journalist and I have always been inclined towards human stories and like giving back to the community and working with stories that I'm very passionate about. And आज I'm going to talk about sexual violence and how you can challenge it या फिर digitally protest it online हो या offline. So basically that is what the discussion is going to be about. And yeah, Chitwan, take it forward. Sure. Thank you so much, Nivedita Ji, for giving us an introduction. And I hope that we will have a fruitful session. So, all of us would get that हमारा जो आज का टॉपिक है, डिस्कशन का जो टॉपिक है, वो है डिजिटल एक्टिविज्म अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस. तो सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा मैम कि व्हाट डू यू थिंक दैट डिजिटल एक्टिविज्म मीन्स? डिजिटल एक्टिविज्म अगर एकदम डायरेक्ट ट्रांसलेट किया जाए तो उसको डिजिटल आंदोलन कह सकते हो बट देन इट इज़ नॉट सो सिंपल बिकॉज हर चीज़ डिजिटली नहीं होता है जो भी डिजिटली होता है उसके पीछे ऑफलाइन आपके लाइफ में कुछ हो रहा होता है जिसके वजह से वो ऑनलाइन जाता है एंड देयरफॉर लाइक आज का टॉपिक सेक्सुअल वायलेंस है तो वो तो लाइक ऑफलाइन वट एवर केसेस हैपन अभी तक जो भी आप ऑनलाइन देखते हो न्यूज़ में या जो भी वो तभी आता है जब एक्चुअल लाइफ में होता है एंड देन डिजिटली इट टेक्स प्लेस सो डिजिटल एक्टिविज्म इज दैट जिसमें आप इसके अगेंस्ट इसको चैलेंज करते हो या इसके बारे में इतना बात करते हो कि लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करे एंड उसको आगे ले जाए उस पूरे कॉन्वर्सेशन को लाइक इट बिकम्स वायरल. So that is digital activism according to me. But I would really want to hear from people over here कि उनके दिमाग में first idea क्या आता है जब वो activism सुनते हैं या protest like it. Please feel free to put in words chat में so then I can know like you are with me and yeah. डेफिनेटली. आई ऑल्सो एट दिस पॉइंट मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे हाँ हमारा ये मतलब है कहने का, हमें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है इसका मतलब, या हम शायद कहीं गलत जा रहे हो, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए. और कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए, कोई जवाब हो तो वो भी दीजिए, सो दैट हमें भी पता लगे, आपको भी पता लगे, और एक तरीके से आखिर में हम सब कुछ ना कुछ मिले, समझ में आए. आई गेस फ्रॉम माई साइड अगर मैं बताऊँ डिजिटल एक्टिविज्म से, हम जैसा आपने भी बोला अभी कि ये लाइन आपने बिल्कुल सही बोली कि ऑफलाइन कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि हम व्यक्ति को ऑनलाइन का जरिया लेना पड़ता है टू स्टार्ट दैट एक्टिविज्म, प्रोटेस्ट, आंदोलन. Right. तो दैट्स वन थिंग व्हिच इज टोटली राइट. बट ऐसा क्या है, व्हाट मेड यू चूज दिस टॉपिक इन पर्टिकुलर फॉर स्टडी, कि आप हाँ यही आपने चूज करा अपनी स्टडी के लिए? There are two reasons. Number one, जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट की तो मैंने देखा कि सब मी टू के बारे में बहुत बात करते हैं या फिर कोई ऐसे प्रोटेस्ट जो अमेरिका या फिर यूके में स्टार्ट होती है एंड देन वो इंडिया पहुंच जाती है एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. बट देन इंडिया के प्रॉब्लम्स अलग है, इंडिया के लोग भी अलग है और उनके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं. सो उसके बारे में ज़्यादा कभी किसी ने डिस्कस किया ही नहीं है. And obviously like
अब अगर लंदन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए लंदन के सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन भी स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, बट अब अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम होता है वो इंडियन तरीके से स्ट्रैटेजाइज होगा। सो मैं यही वाला बात आगे लेके जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू टेक इट टू द वेस्ट। आई डोंट वांट टू टेक वेस्ट का चीज टू ईस्ट, आई वांट टू टेक ईस्ट का चीज टू वेस्ट, सो दैट उनको पता चले कि हर चीज जनरलाइज नहीं किया जा सकता, हर चीज का रीजन पॉवर्टी नहीं है या फिर लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है। कभी कभी ये सारे प्रॉब्लम इवन अपर क्लास और अदर सोसाइटीज लाइक जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वहां पे भी हो सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ माय रीजन। दूसरा रीजन ये था कि लाइक फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद सेक्सुअल वायलेंस, मुझे ये रियलाइज हुआ कि विक्टिम ब्लेमिंग इज अ वेरी बिग इशू इंडिया में, एंड स्पेशली अगर आपके नाम के पीछे आइडेंटिटी वुमेन हो तो आप बहुत ज्यादा ब्लेम हो जाते हो उसको लेके, इधर आपके क्लोथ्स के वजह से या फिर एक सोसाइटी का नॉर्म होता है कि ओके बीइंग अ वुमन यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस और यू आर नॉट अलाउड टू वेयर दिस, आप रात में जा ही क्यों रहे थे अकेले, या यू नो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉनोटेशंस, एंड जिसके वजह से आई थॉट कि या व्हाई नॉट, लाइक आई शुड रियली लुक इनटू इट एंड इसके बारे में और रिसर्च करना चाहिए, एंड लेट्स सी कि मेरे जैसा और भी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, एंड इससे क्या पता चलता है एंड ऑल लाइक Mm-hmm. हार्डली कभी भी हम लोग हमेशा विक्टिम या फिर सर्वाइवर के स्टोरी के बारे में बात करते हैं, पर हम कभी उनसे ये नहीं पूछते कि हाउ डू यू लाइक फाइट अगेंस्ट इट, आप ये सब हो जाने के बाद आपने क्या किया, हाउ डिड शी चैंपियन इट या हाउ डिड शी फाइट इट। हम लोग हमेशा उनसे पूछते कि क्या हुआ था, क्या इवेंट था, कैसे हुआ ये सब, अरे ये भी तो पूछो कि what is she doing, like how is she coping with it। so my project is about focus यही है कि like जिन्होंने भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाया है किसी भी तरीके से उसके बारे में जानना, not about their personal experience with sexual violence। वेरी राइटली सेड। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम में से कई लोग जनरली भी भूल जाते हैं किसी भी विक्टिम से ये पूछना दैट हाउ आर दे डीलिंग विद दिस, यू नो, Yeah. बिकॉज एक तरीके से देखा जाए सोसाइटी में ये नॉर्म फैला हुआ है, बिठाया हुआ है कि द विक्टिम इज आंसरेबल रादर देन द पर्सन हु डिड दैट। ये एक सबसे बड़ा नॉर्म जो है, मुझे लगता है अपने पर्सनल व्यू से। तो यू नो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हिच आई विल बी लैंडिंग टू वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट in general also, that you know many women including trans women, when they go through sexual violence, consider silence as the best option because of multiple reasons which we will be discussing. What do you think that they should do, like to whom should they speak to? Number one, I'm being a woman myself, I would say कि I absolutely don't judge them being silent, because Mhm. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त क्या क्या चलता है दिमाग में, क्योंकि बहुत कुछ चलने लगता है कि लाइक लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही रहता है कि कोई समझेगा भी नहीं समझेगा एंड ऑल। सो इफ आई हैव टू से कि इमीडिएटली हु शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटाइज कि आपके लाइफ में सबसे ट्रस्ट वर्दी कौन है, एंड अगर उसको भी आप ट्रस्ट करने से थोड़ा डरते हो तो safest would be a professional guide। It can be a lawyer or a counselor or an organization where you have a bond कि चीजें confidential होंगे, not just anyone। So I would say that is the first thing। and if you अगर किसी को टाइम चाहिए इसके अगेंस्ट बात करने के लिए या फिर लाइक चैलेंज करने के लिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लाइक टेक योर टाइम, calm down and then think, क्योंकि like society often acts very cruel, बहुत cruel हो जाती है, and कभी कभी शायद बात करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा डरावना होता है देन लाइक यू नो द इवेंट इटसेल्फ। सो या लाइक प्रायोरिटाइज कि आपके लाइफ में ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन है जिसके साथ सब शेयर कर सकते हो और वो उल्टा आपको ब्लेम नहीं करेगा, एंड अदरवाइज अ लॉयर और अ काउंसलर और अ ऑर्गेनाइजेशन। Hmm. Well, makes sense. And adding to your point, I always feel that most of the people, the victims, there's a stage, there's a phase which I'll say कि हमें पहले खुद एक्सेप्ट करना होता है। Most of us brush the topic off that okay, nothing happened,
There is nothing which has happened. Let's just brush it off. So, what is your view on that? Like, should the people, accept at least themselves first? First of all, it should not be normalized. Violence Biल्कुल. should never be normalized. When you are doing कि ओ हो गया ठीक है, लेट्स नॉट लाइक इसके बारे में ज्यादा इसको ड्रामा नहीं करना चाहिए, इसको लेके इसको बस Hmm. जाने दो। जब आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको नॉर्मल कर दे रहे हो, और जो कर भी रहा होता है उसको लगेगा कि अच्छा ये तो चुप है तो फाइन, लाइक मे बी आई कैन डू इट मोर टू समवन एल्स and I can keep doing it. So first of all, lay boundaries. But हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे बाउंड्रीज एकदम क्लियर है बट फिर भी होता है, एंड दैट टाइम यू कांट डू एनीथिंग बट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अपने बारे में सोचो एंड डोंट नॉर्मलाइज इट, एंड biggest point is don't blame yourself. Makes sense. That is actually true. I would like to, ask our audience that what are their views, because I believe that in our country, especially, there are laws regarding sexual violence which are gender biased. Mhm. The non-consensual vaginal intercourse is the only assault that is considered to be violence, if we see. So, what are everyone's views regarding this? I'll ask you, Nikita ma'am, also. But before that, I want to ask our audience that what are their views on it? My view is like any kind of touch that has not been consented is an abuse. And Hmm. like I know like Indian law ke according it is just vaginal intercourse, and non-consensual vaginal intercourse is what is like against the law. But we all know like a touch even in a inappropriate way can be abuse. And ये सबसे बड़ा example है of patriarchy in our बिल्कुल. society, because we have seen the laws and everything जो भी होता है वो ये दिमाग में रख के किया जाता है कि like from the guy's point of view, or Hmm. like we should before framing the laws एक बार ये नहीं पूछा जाता है कि आई मीन महिलाओं को या औरतों को क्या इनअप्रोप्रिएट लगता है या क्या गलत लगता है, क्योंकि क्राइम उनके साथ हो रहा है, वायलेंस उनके साथ हो रहा है, तो उनको पहले पूछना चाहिए एंड देन लॉज शुड बी मेड. लाइक इन यूके, any kind of inappropriate touch can be considered as an abuse if it is non-consensual. Hmm. It can be like vaginal intercourse, oral, or even just a touch which has not been consented. So I think our laws is the biggest example of kaise patriarchy is still going on in the country, and it needs to be reformed urgently. In fact, a lot of time people think कि ये सब तो legally ही है, like you know mentioned there, तो why not try the other things? क्योंकि वो तो legally कुछ बोला ही नहीं गया है उसके बारे में, so they find a liberty to do it more. Makes sense. I feel that there is this, I would say, masculine ego, which, hinders a lot of people. I would say, मतलब लोगों को लगता है कि जैसा आपने बोला कि अगर आवाज ही नहीं उठाई जाएगी शुरुआत में ही, चाहे छोटा कुछ भी हो, तो वो दूसरे को बढ़ावा दे देता है करने के लिए कि हाँ सही है, सही किया होगा, इसलिए ही वो चुप है. I want to ask this question कि where did the idea of including trans women in your research study come? Why do you think it is, crucial? ऐसा क्या हुआ, या what scenario, something happened, or what interesting point happened कि आपको लगा कि हाँ trans women को we should include in the I study? For me it is like whenever the women words gets attached, the person gets more uh, marginalized or like oppressed. So for trans women, what I thought, like I did a lot of research and I was seeing like trans women ke liye kya, how are they speaking up? What is there? Like digitally कोई ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है जिसमें इनके लाइक इस कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, या फिर I see so many articles ki so like this has happened in Delhi. Yeah, this sexual violence thing has happened in Bangalore, or so many. But then इसके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, कोई community building project हो रहा है, या फिर like how is it digitally being protested, or if not digitally offline also,
कैसे इसको लेके like how you showing like this is not okay, like so I thought like obviously there are some activities जो हो रहा है पर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा रहा है इंडिया में या फिर आर्टिकल्स में या even like outside. So I thought Hmm. like yes, definitely like it fits into my project because we talk a lot about like what is happening in the cities or like what is mainstream, and I don't see anything mentioned about trans women anywhere, or especially with respect to sexual violence or sexual harassment or solutions of how to avoid like these kind of events to happen with trans women. To give us an insight कि हाँ बता सके there are no rights in the first place. आपने जैसा भी बताया that there are certain reasons that जो आपको मजबूर भी नहीं, जो आपको जिसके कारण आपको लगा कि हाँ trans women is supposed to be included. But according to you, that do you realize कि यहाँ पे like कोई laws हैं, होने चाहिए, कैसे laws होने चाहिए हमारे पास, you know, for the especially for the trans women and the trans women community regarding not just regarding sexual violence but any sort of violence अगर हम शुरू करें तो. Yeah, absolutely होना चाहिए. I mean, I don't know अभी तक है क्यों नहीं, क्योंकि I mean it is one of the most important way to like take forward yes like all these issues. And also what I was thinking was when you talk about sexual violence and sexual harassment, and like we keep seeing like suppose let's talk about a protest like Me Too or I never asked for it and everything, but we never see someone speak taking up for trans women or a protest especially for trans women, like Hmm. so my point of view is like if you come forward and you raise your voice and you make yourself appear over there like strongly, make your presence felt, yes, definitely like keep pushing and make the laws, like people who are making the laws like see you are there and make it very prominent what are the like issues. So I मुझे Hmm. लगता है कि like ये completely like you have to like build such a strong community. I think community building goes at the basis of everything, and make a strong presence offline, online, anything. Just create a stir that will make जी. a change. That will make a change. That will make the lawmakers know like okay, this is absolutely wrong. Hmm. So this is what I feel, and I think like the more मैं लोगों से बात करूँ and like more I interact with them, I come to know more about what is the actual problem. The actual problem is the mindset which is still going on, which is going on since like since pre-independence and post-independence. उसमें कोई change नहीं आई है, and बिल्कुल. it, अभी तक there's no change. बिल्कुल, आपने ये चीज़ सही कहा कि अगर हम फ्रॉम आवर साइड अगर हम अपने एफर्ट्स लगाएँगे और दिखाएँगे कि हाँ, जो भी लॉ लॉ बना रहे हैं हमारी सरकार, उनको ये पता चलेगा कि हाँ, कुछ ऐसा है, हमारे को ज़रूरत है और इसको इग्नोर करना तो या फिर जाने देना बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी-कभार हमारे जो सरकार है या जो लॉ मेकर हैं, उनको इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होता है, एहसास नहीं होता कि अ ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है, उनके बारे में भी सोचना Yeah, है। I feel like trans community is strong. Kafi हुँ, like strong presence. I mean obviously everyone is speaking up for their right and everything, but it is also the other communities around with whom you are staying. They are also not, I think they are facing a very outdated mindset जिसमें उनको जो चीज समझ नहीं आती है वो गलत हो जाती है। हुँ, जो मेन स्ट्रीम नहीं है वो उनको समझ, उसके अलावा उनको कोई चीज समझ नहीं आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑल्सो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस लाइक रूलिंग पार्टी एंड उनका माइंडसेट आधा तो मुझे लगता है उसी में सबमर्ज हो जाता है कि कोई कैसे कुछ करे, क्योंकि कभी कभी इट इज ऑल्सो द लॉ मेकर या फिर पॉलिटिशियंस और जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है, आई थिंक लाइक कॉप्स और हुँ। लॉयर्स, अगर उनका ही माइंडसेट रिफॉर्म नहीं होता है हुआ, या फिर ये सब कम्युनिटीज एक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे तो कैसे आगे बढ़ेगी बात। बिल्कुल।
नहीं, आपने भी बिल्कुल सही कहा। और मुझे ना आज ये एक बात लगती है, महसूस होती है कि डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन ज़रिए के, फ़ोन के या फिर इंटरनेट के ज़रिए हमारे पास काफ़ी पावर है। पहले के बजाय अब अगर कुछ भी होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो एक बार को चाहे दुनिया ऑफलाइन एक साथ ना जुड़ पाए, पर ऑनलाइन तरीके से जुड़कर नो हमारे लॉ मेकर को या फिर जो भी पावरफुल लोग हैं उनको एहसास करा पाती है कि हाँ, कुछ चल रहा है और आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है उसमें, आपका जुड़ना ज़रूरी है उसमें। तो इसलिए आई विल गेट टू दिस क्वेश्चन। मुझे ये सवाल पूछना था कि आपको क्या लगता है कि डिजिटली जो करते हैं, ऑनलाइन हम एक्टिविज्म करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पूरा अपना दिखाते हैं कि हाँ, आंदोलन करते हैं हम ऑनलाइन ज़रिए, तो ये किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का पहला स्टेप होना चाहिए, ताकि पता लग सके दूसरे व्यक्ति को, हमारे पावरफुल लोगों को कि हाँ, ये चल रहा है। ये पहला स्टेप तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए। पहला स्टेप है कि आपस में कम्युनिटी बिल्ड करो एंड जी। स्ट्रेटेजाइज कैसे अपने आप को यू कैन पुट योर अपना इश्यू आप आगे कैसे लेके जाओगे। पहले हुँ, बिग हुँ। लाइक यूनिटी, यूनिटी अमंग योरसेल्फ एंड फिर आइडेंटिफाई करो कि आप कैसे इसको आगे लेके जाओगे, कैसे और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करोगे एंड बिल्कुल। हर प्रोटेस्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्टिकल या ड्रामा या फिर थिएट्रिक्स, हुँ, क्योंकि उसके अलावा यू कांट गेट द अटेंशन, like you have to create the attention, but by drama or spectacle I don't mean कि chaos कर दो या हुँ, कोई हुँ, vandalism करो या कुछ वैसा नहीं, तोड़ फोड़ करो या कुछ, बट ऐसा करो कि लाइक जिससे ये लोग लाइक पॉलिसी मेकर, लॉ मेकर इनको दिखाई दे कि हाँ ऐसा ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इसको लेके हमको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल। आपने वो ड्रामा वाला पॉइंट बोला, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से अगर हम देखें कि ड्रामा की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमें यही पता लगता है कि ड्रामा एक तरीके से वो होता है कि एक एक ए पर्सन है, वो बी इंसान को अपने अपीयरेंस के द्वारा या फिर अपने आवाज़ के द्वारा या अपने हाथ-पाँव हिलाने के या फिर कुछ भी एक्शन के द्वारा बताना चाह रहा है कि हाँ, ये समस्या है या ये चीज़ है। तो ड्रामा इज़ एक्चुअली अ गुड अप्रोच, देखा जाए तो। But this brings me to this one part that do you also feel, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि खाली डिजिटल एक्टिविज्म ही या फिर ऑनलाइन के द्वारा आंदोलन ही सिर्फ एकमात्र वो है। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो फ़ोन खोला, अच्छा समस्या देखी, समस्या को शेयर कर दिया और हमारा काम वहीं खत्म हो गया। कई लोग हम में से ऐसा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या डिजिटल एक्टिविज्म पर ही रुक जाना चाहिए या फिर उसके आगे क्या करना चाहिए इंसान को? नहीं, डिजिटल एक्टिविज्म बस एक पार्ट है इस पूरे जी। प्रोसेस का, बट ये प्रोसेस नहीं है। डिजिटल एक्टिविज्म जस्ट एक जरिया है सब तक पहुंचने के लिए एंड बट मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये है कि लाइक ऑफलाइन आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार लाइक हमारे जो पुलिस या फिर लॉयर्स या लाइक पॉलिटिशियंस ये लोग खुद भी मुझे नहीं लगता कि लाइक डिजिटली बहुत एक्टिव है या फिर दे कैन अंडरस्टैंड ये सब। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज लाइक गोइंग टू देम और मेकिंग लाइक ऑफलाइन, हम में से भी बहुत लोग ऑनलाइन प्रेजेंट भी नहीं है। सो इट्स लाइक हुँ, वहां तक भी बहुत बात पहुंचनी चाहिए एंड वो तभी होगा जब आप ऑफलाइन कुछ ऐसा करो या फिर लाइक अगेन इट कम्स टू कम्युनिटी बिल्डिंग, आप सबको इन्वॉल्व करो। डिजिटली बस ये हो सकता है कि ये चीज बाहर तक बात पहुंच सकती है, सबको एक एक फ्लैग नजर आएगा कि लाइक ओके यहाँ पे ये हो रहा है, वहां तक यहाँ पे ये सब चल रहा है, बट उसके बाद क्या आजकल लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड इन सब पे 1 सेकंड के लिए लोग देखते हैं एंड दे फ्लिप। हुँ। सो the main cheese is what is happening offline and then उसके बाद keep creating stuff offline that can वो वापस वो digitally जाएगा and तब लोग देखेंगे and all, but main चीज offline होनी चाहिए and बिल्कुल, simultaneously आप उसको digitally support कर सकते हो, but digital is not the only way। मेक सेंस। हमें से एक्चुअली आप जैसे मैंने भी शुरुआत में पूछने से पहले कहा था कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तक ही चीज़ें सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें भी शायद बहुत हैं कि ऑनलाइन ही हम ऐसे सीमित कर देते हैं अपने आप को। वहीं से शुरू, वहीं पर खत्म। पर
आपने जैसा बोला कि ऑफलाइन ही रियलिटी है, असलियत बाहर जाके है, ऑफलाइन है। और जैसे कि हमने अभी शुरुआत में भी बोला था, एकदम शुरुआत में, कि ऑफलाइन होता है इसलिए ऑनलाइन आया जाता है, क्योंकि बाहर एंड होता है इसलिए हम। कल जी को जी। अगर आप इमेजिन करो कि इंटरनेट बैन कर दिया गया, जी। लाइक पॉलिटिकली आजकल कुछ भी हो रहा है, सो इट जस्ट इमेजिन कि हम्म। आपका इंटरनेट ऑफ हो गया या फिर कुछ टाइप का ऐसे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए इंडिया में कि लाइक आप सोशल मीडिया यूज भी नहीं कर सकते, कुछ यूज नहीं कर सकते, तब क्या होगा? तब आपको अपने रियलिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा, जी। आपके आसपास के लोगों पे, आपके कम्युनिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर इट बिगिंस। बिल्कुल सही बात कही आपने। अम, पूजा जी कह रही है दैट मेक्स यू वंडर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द डिजिटल डिवाइड। Absolutely. That's why I was saying कि online and digital may be एक part है, but it's not the only thing. And digital divide तो बहुत ही ज़्यादा है, because like there are इंडिया में मे बी आप गिन के सारे बड़े सिटीज के बारे में नाम दे सकते हो मुझे, लाइक मे बी 5-6 होंगे, बट हम्म। उससे ज्यादा तो लाइक आउट नंबर्स, लाइक द रिमोट एरियाज आउट नंबर्स सिटीज। सो उनके बारे में क्या, लाइक उनमें तो बहुत लोगों के पास शायद स्मार्टफोन भी नहीं है एंड लैपटॉप नहीं है, और थिंक हम्म। अबाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो मेरे प्रोजेक्ट के ज़रिए मैं यही अचीव करना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कैसे इस बात को आगे ले जाते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि वहाँ पे भी ये सब इश्यूज है, एंड बिल्कुल। हाउ women फ्रॉम those एरियाज ऑफ द कंट्री, वो लोग कैसे इस बात को लेके लाइक दे आर क्रिएटिंग अ वॉइस, या फिर हम्म। लाइक क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं, क्या वो खुद से कुछ कर रहे हैं, या क्या हो रहा है वहां पे, क्योंकि जी। इन चीजों के बारे में कोई बातचीत ही नहीं होती है कहीं पे भी, हम्म। एनीवेयर, चाहे न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, या लाइक हाउ आर दे सपोर्टिंग ईच अदर, लाइक क्या टेक्स्ट करके लोगों से बात करते हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके, या फिर कभी कभी लाइक जस्ट एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, आज यहाँ जाके हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे एंड एवरीथिंग। सो या सो एब्सोल्युटली राइट पूजा, लाइक डिजिटल डिवाइड इज अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। एंड Simran ma'am, can we like have someone, from the whole, I would say, participants, जो हमें एक तरीके से insight दे सकें कि what are their views upon digital activism, आंदोलन? Ramya ji is saying that if you can share one case study from your experience that shows digital activism has immense potential to reduce sexual violence. Uh, I didn't get your name, but that is amusing because digital activism hasn't reduced sexual violence. But I can just name one, एक ऐसा protest जो मेरे को लगता है कि they are making a point is sorry, actually दो, one is Me Too जो हुआ था, जिसके वजह से सब लोग अपना स्टोरी डालने लग गए, एंड उसके बाद तो Me Too भी हट गया, पर लोग बस अपना स्टोरी बताने लग गए, एंड हम्म। इसके अलावा आई रियली लव दिस वन प्रोटेस्ट दैट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसका नाम है आई नेवर आस्क फॉर इट, एंड हम्म। उसमें लोग अपने लाइक सेक्सुअल अब्यूज या वायलेंस के वक्त वो जो कपड़े पहने हुए थे वो दे सेंड इट टू द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दे पुट इट डिजिटली एंड दे से कि आई डोंट आस्क फॉर इट, क्योंकि कभी कभी ब्लेम आ जाता है विक्टिम पे कि ओ तुमने क्या पहना था, एंड उस वक्त रात को तुम क्या पहन के जाई थी, पार्टी कर रही थी या क्या, लाइक देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट ब्लेम। सो दिस one activism I felt made the point कि like it's not about clothing, and it's about the intention of the attacker, कि वो क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड क्या हो रहा है, it's not the victim's problem। बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोला। एंड And also थैंक यू राम्या जी। जी। sorry, I नहीं want नहीं to मैम। make one more point that sexual violence is not about sex only, you know, like abhi, like if you see all the things that are going on in India, and sex तो है एक part, but उससे भी बड़ी बात है for sexual violence is hate, and then discrimination, racism, like
पावर डिवाइड, पावर डायनामिक, ये सब आ जाता है, ये सब मिला के फिर सेक्सुअल वायलेंस होता है. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसको मिला के सेक्सुअल वायलेंस होता है. आपने बिल्कुल सही बोला। इससे मुझे एक चीज भी याद आई जो हमारी कंट्री में आई गेस एक बार हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं अगर आपको ध्यान होगा, शायद मैम आपको भी ध्यान हो कि एक बार ऐसा हुआ था कि जनवरी 8 के आसपास ऐसा हुआ था, जो साल याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो भी रेप विक्टिम्स थे, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स थे, उनके चाहे जो भी था वो कोई भी व्यक्ति, उनके कपड़े जो है म्यूजियम में लगाए गए थे, ये दिखाने के लिए कि क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरीके के कपड़े थे, ट्रैक सूट, पजामा, साड़ी, हर एक तरीके का कपड़ा, ये दिखाने के लिए कि जो पहना हुआ होता है वो प्रवोक नहीं करता, इट इज योर माइंडसेट, आपकी सोच है जो आप प्रवोक करती है। तो मतलब कि इज देयर एनी, मैम ने भी जिस तरह का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, which is कि is there any example from outside how do you break this mindset? And from outside, from here, what I would say is, number one is like there's no political layering to the incident or any kind of like over here when it is a sexual assault or sexual violence case, it's only a sexual assault or a sexual violence case, be it to a trans woman or a trans man or even like anyone, male, female, anyone, it is treated as a sexual assault case. It does not become like, oh, उसको कैसे, क्या पहनी हुई थी, या फिर कितने बजे रात को बाहर थी, या अकेली थी, या किसके साथ थी, ये सब नहीं है. बट ये माइंडसेट चेंज करने को बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा है. ये इफ यू सी अपने घर में भी, लाइक आवर पेरेंट्स, उनके भी माइंडसेट एक तरीके के हैं, उनके मम्मी पापा के भी माइंडसेट एक तरीके के थे. आई मीन ये जनरेशनल है, ये माइंडसेट चला आ रहा है कब से. एंड इन माय प्रोजेक्ट आई स्टडी अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म. तो इसमें ये दिखाया गया है इस थ्योरी से कि लाइक जब ब्रिटिशर्स थे तब उधर एक सर्कुलर चलता था जिसमें ऐसे बैन किया गया था कि तुम किसी भी नेटिव के साथ यू आर नॉट अलाउड टू बी सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड और इवन इन्वॉल्व्ड. एंड सो उसका वो लोग रेशियली एडवांटेज लेके दे यूज टू लाइक रेप natives which are like colonized people like Indians. And like they used to think it, if we can't get involved with them, then okay, maybe just sexual violence is the answer. And like that's how it went on. अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट ये माइंडसेट अभी भी है, बिकॉज जो जो लोगों को लगता है कि वो उनके जैसे नहीं है, तो वो अपना पावर डायनामिक दिखाने के लिए दिस सेक्सुअल वायलेंस कभी कभी लाइक दे ब्रिंग इनटू द पिक्चर. So like आज we can see casteism and also like violence towards like LGBTQ community, like be it like trans woman, trans man, anyone who is bisexual, lesbian, gay, anyone, like whoever identifies differently. I think it becomes more about power, who has more power. And mindset wipe out करने को बहुत टाइम लगेगा. It is like in ये सिर्फ हर एक घर में है, हर एक सिस्टम में है, और ये जनरेशनली चला आ रहा है. तो ये इधर हम लोग खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के खुद वी टेक केयर कि या अपने आगे वाले जनरेशन और अपने इस जनरेशन में वी डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस, वी डोंट जज और वी थिंग्स लाइक व्हिच इज डिस्क्रिमिनेटरी. बिल्कुल मैम, इससे ना मुझे काफी इंटरेस्टिंग एकदम अभी एक क्वेश्चन वो हुआ, जिसके बाद आई विल आल्सो लाइक टू टेक राम्या जी का क्वेश्चन नेक्स्ट, कि आप जैसे यू आर डूइंग रिसर्च, तो आपको क्या इसके बारे में पता लगा है कि ऐसा क्या कारण होता है जो इंसान गलत कर रहा होता है उसके दिमाग में, स्पेशली टुवर्ड्स ट्रांस वुमेन एंड वुमेन इन जनरल, के मतलब कहाँ से वो माइंडसेट जनरेट, ऐसे क्या कारण होते हैं जो उनके अंदर ये माइंडसेट जनरेट होता है? ये वापस वही आंसर के तरफ लेके जा रहा है मुझे कि पावर डायनामिक नंबर वन, बिकॉज इनको ये लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि हाउ इज दिस पर्सन अ ट्रांस वुमन, और हाउ लाइक दे कांट रैप देयर माइंड
around the fact like aisa, like there are people who have their own choice, who can live according to their own choice. So when they're doing aisa type ka violence and like sexual violence, it is their way of like proving authority ki Mm-hmm. it, be whatever choice you have, but it is still the way it has been, like the same old colonial way, like men versus women, and men are still like patriarchy is the biggest like I think problem. I was going to say sin. जी, आप सही कह रहे हो इस बात के लिए कि हाँ, लोगों को ये समझ नहीं आता है कई बार कि a transgender person, trans woman, trans man, or any person from LGBTQIA plus community, it's not कि लोगों को लगता है ऐसा कि रात को सोए सुबह उठे कि हाँ, चूज कर लिया, वी आर ट्रांस Yeah, पर्सन, वी आर अ क्वेयर पर्सन। पर ऐसा होता नहीं है, उनको ये समझ। एंड मुझे लगता है कि उसमें पूरी तरह से भी उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती ये जरूर है कि वो लोग समझना चाहते नहीं है। mm, ये एक मुझे बहुत बड़ा फैक्टर था, और इसलिए मैं अब रामा जी को रामा जी क्वेश्चन जो उन्होंने बोला, he just want to know, are we educating enough about the different portals that victims can submit their complaints by not broadcasting their identity? Should we simultaneously voice out and make system stronger? this is a very lovely point, Ramya, because throughout like अभी तक मैंने जितना रिसर्च किया है मुझे ये दिखा है like अपने पार्टिसिपेंट से कि कई बार वो लोग वॉइस आउट करते हैं एंड देन उसके बाद उनको रिग्रेट हो जाता है क्योंकि आइडेंटिटी रिवील हो जाती है एंड Hmm. बहुत बार बहुत लोग बात ही नहीं करना चाहते बिकॉज आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। सो इसको भी अवॉइड करने का तरीका है। One, you can be super creative about how you voice out. Like one of the method which I came across and I found it very creative was this person was making poem and art and just giving like super strong captions to her thing, and she was doing it offline as well as online, but that was her way of protesting against sexual violence. And मतलब वो उसके साथ साथ ये भी बोल रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, like very impactful captions and all. ठीक है, जी। that is one way. And about educating people about how they can broadcast, you can definitely have like where you can have forums or workshops where आप सब लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो एंड लाइक टेक अप अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कि लाइक ओके हम लोग ये फोरम मेंटेन करेंगे, इसमें हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे इन द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे पॉसिबल। एंड व्हाट इज इम्पैक्टफुल, इसमें आपको पार्टिसिपेंट्स को कंसिडर करके ही आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज जो आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा शायद दूसरे के लिए नहीं होगा। सो ईच पर्सन कैन गेट टू लाइक एक्सप्रेस इट इन देयर ओन वे। बिल्कुल सही बोला आपने ये। एंड इसलिए क्या कहते हैं, हम जो पूजा जी ने भी बोला था अभी कि टॉकिंग अबाउट पावर डायनामिक, रेप और सेक्सुअल वायलेंस इज इवन प्रोमिनेंट अमंग मैरिड कपल्स, रोमांटिक रिलेशनशिप। हाउ डू वी डिफाइन पावर डायनामिक रीजन इन अ पार्ट? ये बहुत सही चीज पूछी आपने कि हमारे, एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि लोगों को लगता है दैट स्पेशली मेल पावर, उनको लगता है कि शादी के बाद कंसेंट मिल गया। जी, Yeah. तो उसमें आपका Not व्हाट just योर व्यूज? shadi, it's also like Any dating relationship, or हाँ in any exactly. couple. It is like inherently abhi recently there was this guy who went super viral whose name was Andrew Tate, and such toxic masculinity, and like it is always about like showing like, oh, the male is there only to protect and provide and like do whatever they can, like to their role is to protect and provide. But that's how they think like the hierarchy is ki, ki that's why they have the power over women. But to like get rid of this power dynamic, my only way would be like again setting boundaries when something is wrong with you, even if you are an introvert, shy, हर किसी का personality same नहीं होता है, तो make sure कि जो आपको ठीक नहीं लगता वो इनिशियली ही आप बोल दो कि ये गलत है। एंड चाहे आप शादी में हो या कुछ भी हो, आई कैन से बिकॉज आई एम नॉट मैरिड एंड आई कैन जस्ट टेल यू कि हाँ निकल जाओ उस रिलेशनशिप से, बट इट इज नॉट दैट इजी क्योंकि बहुत सारे चीजें भी कनेक्टेड होते हैं।
it might be जी. easy for me to tell you ki haan, like leave it, do like file for a divorce and so on and everything, but maybe the person in question, it might not be easy for them. So I think the best way would be, number one, again, seek help from a counselor or from an organization where they deal with these things and they have a strict confidentiality routine, because बाकी कोई, मम्मी को बताओगे मम्मी इमोशनल रीजंस देगी, पर इन लॉज को बताओगे इन लॉज अपने साइड के लोग क्या कहेंगे टाइप, शायद वैसे टाइप के सॉल्यूशंस देंगे. But if you talk to them, you need a super unbiased, non-judgmental solution that time. Then you decide what you have to do. Yeah, So ma'am, I would like to ask a question actually. I would really like your answers. But the thing is, as you also belong to an Indian family, so I want to know, I mean, how can we generalize these topics and these conversations in our Indian homes? Because communication gap is so prevalent. Um, yeah, yeah, in the, I mean, individuals who are educated, um, it is not that they are educated and they can talk freely. They are also feeling like, no, we absolutely. can't talk about. Yeah, there is, matlab, there is some sort of gap. So how do you think, I mean, you are doing a research about these topics, so it must be, somewhere in your mind that, I also face this thing. I yeah, come from Bengali family in Calcutta, yeah, and so it is very weird for them that their daughter is doing all these things, and yeah, sex, sexual violence इतना openly and all. तो कभी कभी जब मुझे पूछा जाता है कि क्या काम कर रही हो और मैं ये बोलती हूँ, तो immediately I look at their faces, it just goes soup. So, but it's not my problem. You asked for it. You asked me what I do, and I will speak about it. And you can't generalize this. Number one, generalizing means like isko just dal chawal jaisa treat karna. normalizing, yeah, हाँ, normalizing things. but it is, you have to make sure like you are discussing about it in a way that you people know like it's not correct, it's not right. Yeah, Because very recently, maybe it might not echo with everyone, or maybe it's little off topic, but recently I was in my family event, and there was someone who was sort of laughing about what happened in the Air India thing. Like, they were making jokes like, oh, he peed on this woman. yeah, So immediately I was like, shameful. it's not funny. Don't laugh. And you are a 60-year-old man. How dare you laugh at this? Imagine your mom is sitting there. Like, make sure, like, when they're doing this, even if you are a polite person, say it very politely, but say it. Like, it needs to be said. Otherwise, they think it's okay. Even if they think, oh, ये तो बच्ची है, ये इसको क्या पता चलेगा, ये सब क्या है, but at least उनको पता तो चला कि there are people thinking कि it's not right. Yeah, exactly. It was like, um, can I talk freely? Can I can talk personally? I can talk freely in my home. There's no issue. Hmm. But apart from me, individuals like me or my siblings, my younger siblings, they can't easily talk like these topics. I mean, it is very difficult for them. Maybe it's an evolved mindset or something else, but yeah, it is different and it is very difficult and it is challenging. And yes, Also, you you can't even you there comes a point, even if you want to talk, maybe they are not ready to talk about it. exactly, yeah, It is about how they become, they also, I mean, you can't force someone to talk about it. You can just be there and tell them ki, listen, if you ever want to talk about this, I am your person, you can talk to me, and I'm never judging about it, I'm always there to talk. Like, I'm someone you can talk openly. So yeah, this needs to be out there, number one. And I think like a lot of our siblings or like even friends, the thing is like we have been brought up in a way in a society where ये सबको taboo माना जाता है. I mean, sex out of marriage or even like sex, even in marriage, they won't talk about it. Like, it's such a big taboo. exactly.
I mean, I get it. Like कभी कभी ऐसा हो सकता है कि like इसको अब generalize और normalize करने के लिए I won't keep talking oh sex 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 and all these things. No, I won't do that. But just be normal about it. Like if the topic comes up, feel like it's okay. It's just another topic, Yeah, and it's just another conversation we are having right now. Do you see any change in approaching victims of sexual violence, especially in the case of trans women? as of now I haven't. I have to be very honest, and it is like, again, it is a very systematic problem. Like there's no change about it, which needs to be there. And this is where I come to my topic of including trans women in my project, because I have seen like other projects which have done similar things like me or maybe not like me, they speak about like Dalit women, minority groups like Muslims, and then indigenous and northeastern state, which is absolutely amazing. But like there's a big thing that is happening right in front of our eyes. Every state, every city has so many trans women. No one is talking about it. No, I feel everyone just turns a blind eye when it comes to trans women. They just don't want to talk about it, because it makes them uncomfortable. But their uncomfortableness is not a problem, because our problem is the issue on in front of us. I also, sometimes मुझे ऐसा भी लगता है कि हमको ये जानना जरूरी है कि वेदर और नॉट, चाहे हम कम्युनिटी से हो या ना हो, चाहे एक Exactly. व्यक्ति वुमेन भी हो या ना हो, आइडेंटिफाई एज वुमेन, हमें अपने घर में छोटे छोटे बेबी स्टेप, जैसे कहते हैं, छोटे छोटे कदम लेने जरूरी होते हैं आज के टाइम पे, कि हम अपने एटलीस्ट अपने घर वालों को ये समझा सके, चाहे हमारे साथ हुआ हो ना हुआ हो, हमारे आसपास भी हुआ हो ना हुआ हो, कि इस चीज के बारे में बात होना कुछ गलत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन। एंड आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अभी हमने जैसे रेनू मैम ने भी बोला, सबने बोला कि कॉन्वर्सेशन गैप होता है, कम्युनिकेशन का जो होता है, तो आई थिंक उसको हटाने में एक देयर इज जो मुझे पर्सनली लगता है रास्ता ये है कि अगर आप एज अ सिसजेंडर पर्सन एंड क्या कहते हैं, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगर आप तब भी अपने घर में उस चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देके, न्यूज पढ़कर, और मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में क्या कहते हैं पेरेंट्स या फिर आपके घर वाले या आसपास के जो भी आपके लोग हैं वो समझना शुरू कर देंगे या कह देंगे कि हाँ चलो बात करते हैं, ऐसा तो बहुत बहुत रेयरली होता है। पर आई थिंक ये करने से ही, जैसे कहते हैं ना, छोटा सा कदम होता है, बेबी स्टेप होता है, ताकि आपके आसपास वालों को ये तो एटलीस्ट समझ में आ जाए कि हाँ इस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में बात करना गलत है। कम से कम आप अपने आप को ऐसा दर्शा पाते हैं दूसरों को कि हाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ इस चीज के बारे में बात करी जा सकती है, ताकि कभी किसी इंसान के साथ आपके आसपास जो हो, जिसके साथ ऐसा कभी हो, कभी ऐसा आए हो कि ऐसा ना हो कभी, पर ऐसा कभी हो तो वो आपके पास आ सके बात करने के लिए। तो आई थिंक अपना अंदर से दिमाग का माइंडसेट चेंज करके छोटे छोटे कदम लेके आसपास में लगाना सबसे पहले ही चीज है कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए। I think, Chitwan, you are right. But I also want to add one thing, that it is very necessary to incorporate gender sensitization programs during our childhood. Because, now we are adults, we are talking easily, we can communicate with each other on any of the topic. Right now, if you are aware of current political environment or social environment, we can talk to each other. But in a naive mindset, in a childhood, when we don't know what is happening, what is the good touch, what is the bad touch, and the things like when we don't understand ourselves, जी बिल्कुल। if if these type of programs happen right away in the beginning, then then there must be, there can be a behavioral change which can बिल्कुल impart sensitization among children. And then if one person or if one children is taking a step towards getting to know things, then they'll talk about their parents. जी बिल्कुल They'll talk about their parents, and they talk to their friends, they talk to their parents about themselves also,
about their friends also. If in any case, or if in any emergency, if they are facing any kind of issue in the schools, or if it can be bullying also, it can be sexual harassment also. जी So yeah, I would really बिल्कुल I mean, मतलब मुझे भी आई yeah, थिंक मैम दैट पॉइंट इज बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज के मैं सिर्फ और मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट करूंगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही नहीं खाली बल्कि exactly. एवरी पब्लिक स्पेस ऐसा ना हो कि स्कूल्स में तो चलो शुरू हो कहने को अगर स्कूल में शुरू हो तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी कि बच्चों को पता लगे कि एटलीस्ट गुड टच बैड टच क्या होता है विदाउट एनी जेंडर बायस क्योंकि मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ अपनी अपब्रिंगिंग की बात करूँ तो हमारे स्कूल में 10वीं तक आते आते हुआ पर सिर्फ वुमेन के लिए गर्ल्स के लिए हुआ तो विदाउट एनी जेंडर बायस बच्चों को बताया जाए कि हाँ ये होता है असलियत ये होती है और उनको ये भी चीज के बारे में एहसास कराया जाए कि चाहे ये बात को आपके घर वाले या दूसरे लोग तैयार ना हो आपको सुनने के लिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो पर हम होंगे Exactly. और इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बाहर कोई भी जगह कोई भी सड़क हो पार्क हो जहाँ बच्चे हैं वहां के आसपास को मतलब ऐसा को कुछ शुरू करा जाना चाहिए हमारे द्वारा ही या फिर जहाँ जो भी लोग हैं पॉलिटिकल लोग हों पॉपुलर लोग हों या हम एक आई वुड से पॉलिटिक इंसान भी तब होता है जब वो पहले एक आम आदमी होता है तो आई बिलीव मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी है या इतना स्टामिना है कि हम भी वो चीज शुरू कर सकें एंड वही आ जाती है बात कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं Yeah. और करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं दैट इज वन थिंग Which can lead to reduction in later stages of जी sexual violence and all. Yeah, this is And very. over here, like there's one really good thing that initiative that I mean UK में मैंने देखा अभी start हुआ है which is gender diversity module. Yeah. ये schools में start किया गया है एकदम like they have started from primary school and it is also going on मेरे university में भी it has been like initiated so that people who are very new to all these things unko thoda sa like pata chale ki what is this because we have just started including gender neutral washrooms and like spaces like so that people understand like I think if you even start a short course like gender diversity module and stuff where people are educated about it I think it'll start normalizing the differences and like good touch or bad touch की जो बात किया है, that is amazing because that is what we are never taught बचपन से बस हम जी लोग को बोला जाता है ऐसा नहीं ऐसे नहीं बैठते या ऐसे नहीं करते पर क्यों क्या हो जाएगा उसके बाद ये सब जी हमें कोई इन डिटेल मम्मी भी ज्यादा नहीं बताती है या कोई नहीं बताता है एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू कैन लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जी विशाल जी पूछना चाह रहे हैं कि कैसा उस वायलेंस को कंट्रोल करा जाए जो पेरेंट्स अपने बच्चे पे करते हैं जब उन्हें उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता लगता है तो again this जी brings me to the point which Chitwan just said कि you should हम्म know किसके साथ आप बात करके safe feel करते हो and if not that you should know कि like there are these space you should first of all everyone I think this is not being done in India at all and I think that will help a lot of trans women and a lot of trans men and so many like other like cisgendered women also कि नो योर हेल्पलाइंस कहाँ जाना चाहिए हम में से किसी को नहीं पता होता है जब ये सब होता है कि कहाँ जाके किससे बात करे क्या करे एंड ऑल सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज अभी ये सब पता ही नहीं है किसी को अभी अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ये कि लाइक टू फाइंड आउट एंड कीप द नंबर्स और द links and everything with you all the time so that you know where is your first resort to go and to talk to जी and because I think kabhi families are like very lovable people but sometimes they don't understand the differences and like what makes us different or what how do we want to be treated जब कोई चीज थोड़ा अलग लग जाता है तो तब they react जी and आई थिंक can't go दैट्स अ राइट पॉइंट एंड जैसा विशाल जी ने आपने पूछा अभी कि हाँ आई थिंक निवेदिता जी वेरी वेल सेड कि हाँ सही बोला आपने एंड ऑल्सो एडिंग टू इट मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स आर सपोज टू नो
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पेरेंट का, गार्जियन का ये जानना जरूरी है कि उनकी मर्जी थी, उनकी इच्छा से वो बच्चा आपके घर आया था, किसी और की इच्छा से नहीं। तो मतलब ये मेरी अप्रोच है। आपने जो बोला बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि बच्चे की पहचान से फर्क नहीं होना चाहिए, बच्चे से फर्क होना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। और सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी बीच में आनी ही नहीं चाहिए। तो मतलब कहने को ये बहुत बड़ी बात है और बहुत टाइम लेगी किसी भी पेरेंट के दिलो दिमाग में आने के लिए, क्योंकि सोसाइटी नहीं आने देती है। पर वही मैं बोलूंगा कि जब तक हम खुद के एफर्ट्स थोड़े एफर्ट्स पुश करके नहीं डालेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड वंदिता जी प्लीज आप पूछिए कुछ जो आपको पूछना था। मैं शुरुआत से सुन रही हूँ ये सेशन एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत एरियाज हैं जो बहुत राइटली बोले गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बहुत अग्री करती हूँ कि हम लाइक आई एम अ मदर एंड आई कैन वेरी मच रिलेट एंड से कि जब एक बच्चा छोटा होता है और आपका फर्स्ट लर्निंग आपके घर से होता है एंड सेकंड लर्निंग, दूसरा लर्निंग पैरेलली एक बच्चे का एक स्कूल में होता है, तो जो ये बच्चे के फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, जैसे हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बच्चे को मेल फीमेल लिंग के बारे में बताया जाता है, जी। तो उसी स्ट्रक्चर में, क्योंकि बच्चा बहुत रॉ होता है, हम उसी लेवल पे एज अ, मैं ये कहूंगी फादर डज प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बट हर एक मदर एक घर में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि अपने बच्चों को, बेशक वो कोई भी कैसा भी बच्चा हो, उसको ये चीज समझाया जाए। बेशक बाहर वाले ये बात समझे या नहीं समझे, हम अपने बच्चों को ये चीज समझाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि अपने आप को वो खोल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पेरेंट को और फील जी सेफ कर सकें। मुझे ऐसा लगता है देन उस बच्चे को जब वो बड़ा भी हो जाएगा उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई फील। That's very rightly said. मतलब first of all, thank you ma'am for adding this point as a mother especially, क्योंकि जब मैंने से आपने बोला, I am listening to it as a point of view of mother, it makes me feel that okay, there are people, there are parents, guardians हैं, parents हैं who knows about things। तो मतलब कि अगेन कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीब्यूशन अगर हम करें तो जाते हैं सही जगह पर, सही दिशा पर। कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। पर व्हाट्स ओपिनियन मामले में तो तमाम। My opinion is absolutely like with her, क्योंकि that's why I even mentioned about the gender diversity वाला subject। अभी like primary school से यहाँ पे start हो गया है। अगर ऐसा initiative इंडिया में भी है तो चालू किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फिर बचपन से ही एक नॉर्मल होगा, ये सब नया नहीं लगेगा बच्चों को बड़े होते होते। लाइक जैसे हमारे टाइम में हमको ये सब बताया ही नहीं गया था, हम लोग लाइक ऐसे ही ठोकर खाते खाते वी अंडरस्टूड कि what is what and everything। बट इफ we educate the kid एकदम बचपन से कि okay, there are so many different kind of gender identities and you are free to be what you identify as, like so I think that will take out so many kind of fear and like stereotypical ideas and stuff। So I think that's a very good way to lead on। जी, thank you ma'am, and thank you Vandita ma'am for adding to the plate। And this brings me to one of the concluding questions ma'am, Vandita ma'am, कि हम सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और हमने भी ये रियलाइज करा कि सब करना है, पर छोटे छोटे कदमों के हिसाब से लेकर करना है। तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कीप गोइंग टू परफॉर्म डिजिटल एक्टिविज्म? आपको ऐसा क्या मोटिवेट कर लेता है कि हाँ आपको करना है ये? I am क्योंकि not an activist as such, but जी I जी do speak up a lot। But my thing is कि अभी इस project के जरिए I have met so many amazing people and from different aspects of life, ठीक है, like, and it just makes me feel like wow, I mean they are so strong and that's what keeps me going। and फिर मुझे लगता है कि मेरा stress इनके सामने कुछ भी नहीं है, because they are so powerful, so driven, like so if they can do it, I can also get over my thing and I can be passionate and take up the जी call। So I have met so many amazing women, like from all sorts of communities, and they just keep me going।
That is really well said. And to be honest, अगर मैं अपने साइड से बोलूँ, I feel really thankful first of all कि we have this conversation, क्योंकि हमने अभी पीछे भी बोला कि अब तो we are that mature, कि हम इजीली कर लेते हैं बात। और इसी के साथ मुझे ये भी हम सबको ये रियलाइज हुआ कि हम तो मेच्योर हो गए, जो छोटे हैं उनको मेच्योर मेच्योर भी नहीं करना, पर उनको अंडरस्टैंडिंग देनी है। मेच्योरिटी तो एज के हिसाब से आती है। एंड जो बड़े हैं उनको अनलर्न, पहले जो गलत सीखा है उसको हटाकर फिर जो सही है उसको सिखाना है। पर यही बात आ जाती है आखिर में कि हाँ, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और हमने, अगर ये हर जगह कोई हर इंसान यू नो हर घर में अगर कहा जाए इनिशिएट करे थोड़ा सा भी, टेकिंग छोटे छोटे स्टेप, तो आई थिंक ये पॉसिबल है। तो दैट्स वन And थिंग। also, I wanted to add one more thing about जी मैम। normalizing different gender identities and gender diversity. One thing which I do is if I'm dating someone, or I'm in a relationship with someone, my first thing like when we reach to a stage of talking, I make sure like they know like how I am. And my first question is, if my kid says like they are gay or they're lesbian, or they identify as a woman when they are like born as a boy or something, what will your reaction be? So that sort of tells me everything about my partner, what he thinks, what he doesn't think. And if he is rigid, he is good to go. Bye. Like, so make sure like you know who you are with, and like you're surrounding people around you just like mindset kids, or if even if they're not like mindset, they're ready to like be flexible and understand the differences. बिल्कुल, दैट्स वेरी Differences राइट। को भूल नहीं जाना चाहिए, हम लोग को differences accept करना चाहिए, because differences bring diversity. That's very much sensible, and I would say काफी अच्छी अप्रोच भी है, to क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि हाँ, to have people around you who are at least supportive of you when you are thinking, which is a broad thinking, I would say. तो एंड अगर मैं कंक्लूड करूं अब, तो आई से जो हमने टॉपिक लिया उठा के, डिजिटल एक्टिविज्म अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें मैम आप रिसर्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रांस वुमेन स्पेशली। सो my message to every person, regardless of their gender identity, sexual orientation, regardless of any boxes, I'll say कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर निर्भर करता है सबसे पहले कि हम वो बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। जैसे ही वो हो जाता है कि हाँ, मुझे ये बदलाव लाना है, तो आ जाता है वो इवेंचुअली। बहुत समय लगता है, कुछ में नहीं भी लगता है, ईज़ी होता है, कई जगह आसान होता है, सबकी अलग-अलग है। पर अगर वही डिजिटल एक्टिविज़्म, ऑनलाइन मतलब ये आंदोलन, नेटवर्क के ऑनलाइन ज़रिए, इंटरनेट के द्वारा, ये छोटा-सा स्टेप है। हम पहली सीढ़ी हमने जैसे डिस्कस करा, पहली सीढ़ी तो नहीं कहेंगे, पहली सीढ़ी तो आपकी खुद की अप्रोच है, खुद का एक्सेप्टेंस है। बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी है कि हाँ, अब कम से कम अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं सपोर्टिव हूँ, हम सपोर्टिव हैं इस चीज के लिए। तो दैट्स माय कॉल। मैम, हाउ वुड लाइक टू कंक्लूड? I am very happy to have met so many people, and initially I started with butterflies in my stomach, but then I found it's so lovely ki like itne sare log, they all are like thinking in the same way, or like sabka aim wahi hai ki like how to challenge this whole issue. And I'm so happy to see like there's so many women here, trans women here, who are ready to take up this challenge, and they want to know about it, कि कैसे इस issue को like we can like extend the conversation and take this up and make an impact. I mean, जी। because like I said, ki mainstream mein I never, like I do see like maybe handful of trans women whom I know, or like even from my personal connections whom I know, like who do talk about it, but I don't see anyone covering about it, or any specific article just about it, और उसका follow up नहीं होता है। एक निकलता है, उसके बाद उसका follow up कुछ नहीं है, जबकि मी टू अगर आता है तो उसके तो 1000 आर्टिकल निकल जाते हैं, जी, but when it comes to trans women, I don't see anything. बिल्कुल। सो मतलब वही हमें बदलाव लाना है अपने तरफ से एटलीस्ट। सच में रियली रियली ह्यूज थैंक यू आपको। सो धन्यवाद दिल से कि आप सब आए, समय निकाला। आज के टाइम पे जैसा हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन निकालना समय बहुत मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। स्क्रॉल करते रहते हैं हम, देखते रहते हैं। तो
इतना समय निकालना और सुनना, समझना और सीखना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है हम सबके लिए। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ एवरी वन ओवर हेयर कि हमने ये करा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड उसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा आप सबको, एंड रियली थैंक यू टू निवेदिता मैम फॉर गेटिंग अ लॉट टू अस, क्योंकि एकदम डिफरेंट टाइम जोन में होकर भी उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल कर, thank you ma'am for giving us time and space and energy and motivating us, to be honest, कि हाँ हम बात कर सकें चीजों के बारे में। Thanks to all of you. Thanks.